Good evening. How are you doing, mascots? Good to see you. कैसे हो? Yes, good evening, good evening, good evening. बढ़िया एकदम. चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए. हाय विदिशिका, मधुमिता. नहीं बेटा, जस्ट रिफ्रेश कर लीजिए, बिल्कुल भी लैग नहीं है. गुड इवनिंग. नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए. राइट, CBSE Term 2 Cell Cycle English. Let's get started. Good evening. Very important topic, both from NEET point of view as well as from board point of view. Cell division, cell cycle. Let's get started. Interesting topic. Bits and pieces of it are very tricky, and that's the reason why you will have to understand. We've got some brilliant slides, and without any further delay, let's get started. What we're going to do today is we're going to start two new topics. One topic is cell cycle that I'm going to start at 7 p.m. and another very important topic I'm going to start at 9 p.m. which we could not continue in the last class, which is microbes. So many of you will be appearing for NEET 2022. Thank you, Ankit. So many of you will be appearing for the NEET 2022 examination. How exactly do you have to revise is also something I'm going to be telling you right now. Done? So can we start, everybody? Make sure that you're liking, make sure that you're sharing, and most importantly, make sure that you're subscribing to our channel. Have you all liked? Have you all marked your attendance? Done, done, done. चलिए, आज रात को 8 बजे VSAT का एग्जाम भी है. Don't forget that. Make sure that you give the examination. Good evening. Good evening. So, Vani for Vedantu is my official Instagram account, and if you have any problems, यार DM मत किया करो. मेरे तो कम से कम 50 करोड़ मैसेज आ जाते हैं. मैम, I've DM'd you. मैं एक AM में रखा. Don't DM me, tag me in a story. It becomes easier for me to reply when you tag me in a story, because I have to otherwise reply back to hundreds of DMs. Can you imagine? The very first book is like a runaway success. I think there are just about 200 copies remaining out of the thousands that were published. It's going to be house full and it's going to be sold. Shreya, kaun sa live? 9 baje, Shreya. Right, so don't miss this. 5,000 questions just for 500 rupees, and questions from every corner of NCERT. जिन ने ये book ले ली है, please make sure that you write an Amazon review, and yes, Sanjana, tag कर दिया करो. That makes it very easy for me to see and reply to your messages. Also, very important, like, share, subscribe. Done? चले? Oh yes, Shreya. Let's do an Insta live. एक दो दिन में WhatsApp. We'll do that. One of these days, let's quickly have an Insta live. Done? Okay? चलिए, so मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा लेती हूँ. Thank you Astuti, thank you so much, that really means a lot. And चलिए, let's get started. Let's come to cell cycle. Right? Cells सबको पता है, two types of cells are there, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes do not have a nucleus. Yesterday we did a question. There is bacteria, they don't have membrane bound organelles, they don't have a nucleus, they belong to prokaryotes. The ones which do have a membrane bound nucleus, the ones which do have organelles are referred to as eukaryotes. So cell cycle में, right? Cell cycle में हो गया हमारे पास. What is cell cycle now? ये जो cell होता है, ये divide कैसे करता है? How will it move forward? How will it divide? Right? कुछ तो करना पड़ेगा. That all is a part of cell cycle. Are you understanding what I'm saying? So the consequence or the sequence of events by which a cell duplicates in its genome. How are the slides today? Are they beautiful? I try to give them a little cartoonish tinge. Are they beautiful, everybody? Yes. वेदांतु में 12 स्टार्ट होने वाला है मनीष इन द नेक्स्ट 15-20 डेज. साथ ही मैं वेदांतु बायोटॉनिक में भी मार्च में शुरू कर दूंगी. ओपी स्लाइड्स डन. सो एक सीक्वेंस होता है, ऐसे रैंडम नहीं होता, एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक. देयर इज अ सीक्वेंस. उस सीक्वेंस में जिसमें एक सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को. देखो, अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो देंगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आंचल? वो है एक सेल का न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में उसकी इंफॉर्मेशन है. उस इंफॉर्मेशन को जीनोम कहा जाता है. क्या कहा जाता है इंफॉर्मेशन को? जीनोम. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? राइट? तो सीक्वेंस जिसमें वो जीनोम को देगा
उसको हम कहेंगे सेल साइकिल। एंड इवेंचुअली सबसे पहले वो अंदर के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, देन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 cells. It is a sequenced program. Can it be random? No, it cannot be random. It has to be sequenced. It is referred to as the cell cycle. It starts with G1 phase, which is growth 1. It comes to S phase, which is the synthesis phase. Then you have the G2 phase, and finally you have the M phase. So G1, S, G2, M. Genome is the nucleus here, the information which is required to make the next offspring, and that sequential flow of information is referred to as a cell cycle. Cell cycle allows the multicellular organisms like a rabbit, like a giraffe, like, you know, bacterial cells and everybody else to grow and divide, and single cell organisms to reproduce. Are the slides very, very cute? I thought it's a difficult topic, so many of you have so much confusion. Let's make some really nice slides. So multicellular organisms are going to grow. Look at this cute bunny bear. And the unicellular organisms is an important point. Please don't miss it. So the unicellular organisms are going to, single cell organisms are going to reproduce, and the multicellular organisms are going to grow. Easy peasy lemon squeezy, right? Sometimes in a long day, it's kind of really nice to see refreshing content, isn't it? Right? You will see my 12th grade batches starting from the 15th. Cell cycle ka duration kitna hota? This is a very important slide. It's a very important slide. Is that clear? It's an important slide. Let's kind of just write important here. Okay, so time it takes to complete a cell cycle varies greatly. A fruit fly, Drosophila melanogaster, cell cycle is completed in just 8 minutes. Yeasts take about 90 minutes to complete a cell cycle. Mature cells take longer to grow. A mammalian cell is roughly going to take 24 hours, and a liver cell takes more than a year. Yes, nice, no? Liver cell. It's a very important chapter, both from board point of view as well as NEET point of view. So fruit fly will take just about 8 minutes, yeast will take 90 minutes, mammalian cells will take 24 hours, liver cells will take a year, but they continue to do it forever and ever. Okay. Have you seen the movie Pushpa? I did not like it. I'm sorry. How many of you liked it? How many of you saw it and you? I didn't like it. I didn't see it. I don't watch too many movies personally, and I found it very, like, everybody loved it, but I found it very, I mean, like, toxic and very maar-dhaad, bina sar pair, and overacting. I don't know. I quite didn't like it. I don't love. You loved it? Is it? Then maybe, and everybody is liking it, so I'm thinking, you know, right? My brain doesn't have singing nerves. My brain doesn't have dancing nerves. I think my brain doesn't have movie nerves also, because if everybody is liking it, if I'm not liking it, that means something is wrong with me only. Right? Anyways, you know, right? Because my brain does. If everybody likes a song, I will not like it. I will not be able to understand the song, right? And then if everybody is able to dance to a step, I will just not be able to do it. So I'm thinking, like, you know, if everybody is liking it, if I'm not liking it, there's something wrong. But anyways, what I want to tell you is, I'm sure it's become such a big blockbuster, right? So you're all understanding, but they must have done a lot of research. They must have done a lot of preparation. What is that scene everybody is doing? I just didn't like it. Yes, oh my god, Pushpa, fire hai, flower hai. I don't like things which don't make sense. It has to fire, flower. I don't like it, right? I just don't like it. But anyways, right? No, I didn't like the song. I quite didn't pay attention to it, but I didn't like it. Yes. आपके चैनल पे मीम्स आए थे, रौनक को मेरी टीम ने बनाए होंगे, वो पागल हो गए थे पुष्पा के चक्कर में. Anyways, what I'm trying to say, now this is very important. Why I'm using Pushpa example is because I know you will pay attention when it is Pushpa example. Now what I'm trying to tell you is, and this is a very important point, listen to me very carefully. Did they have to prepare for that song? And I like Samantha Ruth Prabhu. Did she have to prepare for that song? Did people have to get together and think of a story and a script and shoot it and then give it to the public?
Yes or no? How many of you are Samantha Ruth Prabhu fans? I like her. I kind of find her very smart and nice. Yes? Right? So they had to prepare, they had to write the story, they had to get Allu Arjun to act, they had to add Samantha Ruth Prabhu for the song, they had to script the entire thing, they had to do the shooting and all the VFX effects and everything else, and then only they could show you the movie, right? Yes or no? So now what I want to tell you is this. The phase where you prepare, you have to prepare, yes or no? You had to prepare. Allu Arjun had to come and do his part. Samantha Ruth Prabhu had to come and do his part. Is that clear? The part where you have to prepare, where you're going, before you go public, you've got to prepare. Before I come and take this lecture, I have to prepare slides. Before I come and take this lecture, I have to decide what I have to teach you. I have to make a plan, and then only I can come and teach you. It cannot just be a random event. Chalo, I bol diya class mein lecture le liya. Are you all getting my point? What I'm trying to tell you? Right? It is a phase between two successive M divisions. M, let us say, is the movie which you watch on television. M is the part which is happening on screen, but before that you have to see what is happening. Did you understand? So agar M phase uska movie hai, M is the performances, M is what is happening outside, you have to prepare before that. Yes or no? And the preparation phase is the interphase, just like the intermission. It is so. जब वो movie है, M में movie है, उसमें क्या होगा? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. That is the performance. That is what is happening, right? M में nucleus divide करेगा. Nucleus division is called as karyokinesis. Karyon is the nucleus. M में the cell will divide. That's referred to as the cytokinesis. The cell will divide. But before the M phase, I repeat again, before the M phase, there is going to be interphase. G1, S, G2. Am I clear, everybody? Am I clear, everybody? Am I clear? Kazi Gaming, your nice hairstyle carrier. Don't you know my hair? They have a world of their own. They do whatever they have to. They don't listen to anybody. I tell them be straight, they'll be curly. I tell them be curly, they'll go here and there. Anyways, so I'm repeating what I've said till now. सेल साइकिल के दो फेज होते हैं. एक फेज में वो प्रिपेयर करते हैं, जैसे मूवी से पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, सिंगर सब प्रिपेयर करते हैं, तब मूवी रिलीज होती है. वो होता है इंटरफेस. G1 में ग्रोथ होगी, राइट? S में डीएनए रेप्लिकेट होगा, G2 में भी ग्रोथ होगी. सो G1, GS, G1, S और G2, तीन पॉइंट. G1, S और G2. G1 में ग्रोथ होगी, ग्रोथ 2 में भी ग्रोथ होगी, ग्रोथ 1 है, ग्रोथ 2 है, और S में डीएनए का सिंथेसिस होगा. कंफ्यूज मत होइएगा. G1, S, G2, ये जो तीनों फेजेस होते हैं, ये तीनों फेजेस इंटरफेस के हैं, प्रिपरेशन के हैं, प्लानिंग के हैं, और इसके बाद सेल जो है वो डिवाइड करेगा. जब सेल डिवाइड करता है, मूवी जब हॉल में आके प्ले होती है, एम मूवी, दैट इज कॉल्ड द एम फेज. एम फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होगा. न्यूक्लियस डिवीजन इज कॉल्ड एज karyokinesis, or the cell will divide. Cell division is referred to as cytokinesis, and cytokinesis and karyokinesis happens in phases referred to as prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is that clear, everybody? So what is the resting phase? What is the phase where it is planning for division? It is called the interphase. So what is the resting phase? Can you see the word resting phase? Right? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. PMAT. That are the four phases. So the one where the cell is resting, right? The one where the cell is resting is called the interphase. It is planning, it is resting. Is that clear, everybody? It is a resting phase. So before, when when the movie has, when you're shooting for the movie, the actors have to take a lot of cuts. Cut once more. So what do you do between cuts? Tell me. Kajol and Shah Rukh have to give a scene, and somehow Kajol is unable to act properly in that scene. So will they go to their vanity van and rest before the release? They will rest. They will take a break. They will rest. They might practice. Are you getting my point? So that is the interphase. When the movie hasn't released, when the preparation is going on, there is a lot of resting phase. It is the phase between two successive M, right? दो M के बीच में, it is a resting phase. M is mitosis. M is division. M is the division, which is formed of karyokinesis and cytokinesis. The phase which is in between, where the cell is resting, is referred to as the M phase. It includes cell growth and DNA synthesis. Now, before division, the cell will grow. Cell growth is of two types: growth 1 and growth 2. And now, suppose I have two toppers in my class. Suppose, right? There are two people who top in my class, Alicia and Prerna. Both of them top. So suppose I have to give gifts to both of them. So will I require 2 pens and give it to them? Yes, Alicia and Tanush, I will have to have 2 pens and give it to them. Come take.
Similarly, if the cell has to divide, it has to give DNA to both of them. Yes or no? It has to give DNA to both of them. So therefore the DNA will also divide. एक DNA होता है एक सेल में. अब दो सेल बनेंगे, दोनों सेल के अंदर DNA होना चाहिए, दोनों सेल के अंदर DNA होना चाहिए. एक से दो बनेंगे, दोनों के अंदर DNA होना चाहिए. So क्या करेंगे वो? दो बनेंगे. Yes or no? So that is the DNA synthesis, जिसको आप S phase कहोगे. It is 95% of the duration of the cell cycle. Movies, if you have to make movies, sometimes it takes 6 months, it takes 7 months, sometimes it takes 1 year to form a movie. Right, everybody? Now, how long have you ever, Dipanshi, watched a movie for 6 months? One movie continued watching. You watch it fast, M phase, but preparation is 1 year. So 95% of the time is preparation. Did you understand this, everybody? 95% of the time is preparation. Resting phase is preparation. In which phase does DNA divide? Preparation phase. In what phase does growth take place? Preparation phase. In what phase does S phase take place? Preparation phase. Are you understanding, everybody? That is nothing but the preparation phase. So G1, S, G2. See how long it is. G1, S, G2. How long it is. See, so long. See, M is only this much. Small, very small. Did you get my point, everybody? Write it on the chat section, please. Write it on the chat section right now. So interphase has got 3 phases. What are the 3 phases? G1, S, G2. And M has got 4 stages. I told you the 4 stages before also. P, M, A, T. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is that clear? Yo. So let us now come to what is the function of G1, what is the function of S, what is the function of G2, and then we come to the 4 stages. What are the 4 stages? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is that clear, everybody? Done? Okay? G1. Continuous G1 and G2 are growth phase 1. You remember? हमने किया था in photosynthesis. PS2, PS1 जो पहले डिस्कवर हुआ, PS1 जो बाद में डिस्कवर हुआ, PS2. सिमिलरली जो पहला ग्रोथ फेज है G1, जो बाद का ग्रोथ फेज है G2. Are you getting my point? So growth of cell becomes metabolically active. What is a metabolically active cell? This is an important word. This can come. That means वो प्रोड्यूस करेगा, राइबोसोम्स बनाएगा, लाइसोसोम बनाएगा. उसको सब कुछ देना है. It has to give everything. Have you seen your elder brother or sister go to a hostel? मम्मी कहेगी बेटा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, बेड ले जाओ, ब्लैंकेट ले जाओ, राइट? बेड, आई मीन बाय बेड आई मीन मैट्रेस ले जाओ, बॉटल ले जाओ. You know, they will give everything. It becomes metabolically active because if a cell is dividing, it has to give ribosomes, it has to give lysosomes, it has to give endoplasmic reticulum, it has to give everything. Right? So prepares the machinery for DNA replication. RNA बनाएगा, proteins बनाएगा. It will make everything. So if question comes, in which one the RNA and protein is made out of G1, S, G2, M? So answer will be G1 and G2. RNA बनेगा. Protein synthesis continue होगा. It has to prepare for mitosis. Now this is G1. Is it? You have to remember it is before DNA synthesis. And G2 is after DNA synthesis. The growth which is happening after DNA synthesis is called G2. The growth which is happening before DNA synthesis is called G1. Write it on the chat section. And guys, I'm not happy because you're not liking, you're not sharing, and you're not subscribing. So make sure that you hit the like button right now. Done, Ronak? Done. Proteins are S में no, nothing. S में only the DNA is replicating. ये सारे RNA, प्रोटीन वगैरह सब G1, G2 में बनेंगे. ग्रोथ की चीजें, प्रोटीन किस में बनेंगे? G1, G2. DNA किस में रेप्लिकेट होगा? DNA का डुप्लीकेशन किस में होगा? लॉन्गेस्ट फेज कौन होगा? S फेज. DNA डबल हो जाएगा. मतलब अगर पहले 2 ग्राम DNA था तो अब DNA कितना हो जाएगा? आफ्टर S फेज 4 ग्राम. द अमाउंट ऑफ DNA विल डबल. Yes,
पीएम एट तेलंगाना, याद रखिए पहला G1 फेज है, ग्रोथ हो रही है, सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी कर रहा है, आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है. देन इज द एस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज. डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स पार्ट हियर. If the amount of DNA is 2 grams, the amount of DNA will now become 4 grams. But the number of chromosomes will remain the same. That means the chromosome is 1. अब इसकी डबलिंग देखो कैसे हो रही है. On it. Have you ever had grilled sandwich? बाजार वाले कितने लोगों ने खाए हैं बताओ. आपने देखो उसमें 3 ब्रेड लगा के मोटा मोटा सा ग्रिल्ड सैंडविच देते हैं. इट्स वेरी टेस्टी वेज ग्रिल्ड सैंडविच एंड ऑल. It is not this that they will give you 10 sandwiches. They will give you those 2 sandwiches only, but many breads. Did you understand? Chromosome number will remain the same, 23 pairs, but the amount of DNA will double. In home you will take patla sa. Did you understand? Did you understand? Did you understand? Veg grilled. That's why I love. There are 3 breads around. They have that big machine. फिर sandwich के ऊपर they put those lines like this. My mouth is watering. I'm very hungry. Yes, and they'll put those 2 to 3 breads. Sandwich is 1, but so similarly, the chromosome number remains the same. Did you understand? The chromosome number remains the same. So after S phase, will the chromosome number become 46 plus 46? No. Chromosome number will remain 23 pairs is equal to 46. But the amount of DNA will become from 2C to 4C. Did you understand this, everybody? Did you understand this? Write a U on the chat section. Yes, NEET forever. And then you will have the second growth phase. The RNA and proteins will continue to grow. They'll prepare for mitosis. And then you will have mitosis, in which you will have PMAT, Prime Minister at Telangana, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Right? Prophase, metaphase, anaphase. यार मेरे को डरा दिया भाई ये हेलो स्पीक करने 2 बार. आई एम ऑल अलोन एट होम. वहाँ दूर से डीजे शाम को 7 बजे शुरू हो गया हेलो, और यहाँ आसपास दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं. मुझे डर लग गया. ये देखो हेलो, मेरे को लगा भाई खिड़की के बाहर कैसे हेलो कौन बोल रहा है रात को. दिल घबरा गया मेरा. यार देख लेना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. अगर कोई आके मेरा मर्डर करने की कोशिश करता है तो फिर बचा लेना मुझे. हाथ दो. हेलो डर गई मैं. ओ भाई कॉल आ गया घर में. हेलो शाले. Madam, do you like Lata Mangeshkar songs? Who doesn't like her songs? Everybody, I think, likes her songs. She was Nightingale of India, and India has truly lost a gem. But the nervous system for singing and dancing is somehow absent from my brain. God's been very unkind. Like I don't understand songs. I mean, like I don't. कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो मुझे लगेगा गंदा गा रहा है. बहुत गंदा गा रहा है तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा गा रहा है. 99% दुनिया बोलेगी बहुत अच्छा गा रहा है, देखोगे ये बकवास गा रहा है. 99% दुनिया बोलेगी बिना सुर ताल के गा रहा है, बोलोगे बहुत अच्छा गा रहा है. यार आई डोंट नो. सो इट्स पढ़ाई डे यार. ये क्या चल रहा है कल से? रोज डे, चॉकलेट डे, एक पिटाई डे भी होना चाहिए. यस, चले. कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस इजरा. चलिए, सो आते हैं माइटोसिस पे. इट इज अ सेल डिविजन अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स. देखो गोनैड्स हो गए, जो सेक्स सेल्स हो गए, वो मियोसिस करेंगे बिकॉज उनको एग बनाना है और स्पर्म बनाना है. एंड द एग एंड स्पर्म विल अंडरगो मियोसिस. What will it do? Meiosis. Is that clear, everybody? But you have mitosis. So what is mitosis? Mitosis is division of the body cells. Is that clear? What are body cells? They are referred to as the somatic cells. Is that clear? Understood? एक बड़ी मजेदार बात सुनाती हूँ. तो एक बहुत पहले मूवी आई थी बंटी और बबली. उसका नंबर 2 आया है, बंटी और बबली 2, राइट. तो उसमें गाना है हम चले. तो उसमें ऐसा गाना है कि देखो मुझे भूल गया, मुझे गाने याद नहीं रहते. 1 सेकेंड.
उसमें क्या है यार वो गाना, हम झोला लेके चले, क्या है, खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, एनीवेज जो भी है। तो उसमें खाली बोर दोपहरों से, मतलब द आफ्टरनून्स आर एम्प्टी एंड बोर। तो मुझे सारे बचपन में सुनता रहा, खाली भोर, भोर नहीं होता जो फूल लगते हैं आम को फूल, भोर। हाँ, और मुझे लगा दोपहरों, पता दोपहरों को कुछ होगा, कोई फूल होगा, उसको फूल लगा है, वहां से वो भाग गए। और मुझे ना गाना समझ, यू नो लाइक आई विल टेल यू, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक बार मैं कहीं पे गई, सम डीजे पार्टी वाज गोइंग ऑन, या आई एक्चुअली थॉट लाइक बोर्ड्स मॉडल, आई कोई डीजे, एंड यू नो आई, मेरे को मतलब इतना ज्यादा उस दिन रियलिटी शॉक लगा। लोग लिरिक्स सुनते हैं, फिर उस लिरिक्स पानी 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 आंखें आंखें, और फिर उसके हिसाब से डांस करते हैं। मतलब मेरा तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, या तो वो लिरिक्स सुनेगा, उसको डिसाइफर करेगा, उतनी देर में फिर वो साथ का एक्शन करेगा। मेरा तो बेचारा ब्रेन सोचेगा भाई कोई इक्वेशन सॉल्व करवा लो फिजिक्स की, या कोई मतलब मैंने, और उस आई वाज में डीजे पार्टी ना, लुकिंग, सब लोग एक जैसे स्टेप कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और गाना सुन सुन के स्टेप कर रहे हैं। उतनी देर में तो या तो मेरा दिमाग गाने पे फोकस कर लेगा कि गाना चल रहा है, समझेगा, हाँ गाना अप्रिशिएट करेगा, मतलब, और फिर उतनी देर में, जितनी देर में सोचेगा पानी का स्टेप ऐसा होता है, वो तब तक कुछ और चल चुका होगा। एंड आई एम लाइक यार, मतलब मुझे उस दिन इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ, जेन्युइन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे लगा यार ये मतलब मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की भगवान ने। But I can't do that. Hi, I can't do. I'm like I can't do that. I can't listen, comprehend, make the step in my brain, and tell my motor system some problem in the neuromuscular junction or something like that. I will hear, and then my, you know, my neurocortex will find out what they're saying, and then my visual cortex of the brain will see, oh that song, this step, and then my motor neurons will act, and by the time song is over. And people are like listening, and I'm like, wow, I don't have this talent. Like, I really don't have this talent. I'm like, yeah, this is I love it. And you know, because I'm thinking visual cortex, neocortex, this, and my head will spin, and I'll be like, Jairam ji, thank you so much. Let me go back and rest. No, crazy. I must do that, right? It's so much fun I'm missing on in my life. I don't know how to sing and dance. What a waste. Anyways. So it's a cell division which occurs in the somatic cell. Somatic cell are the body cells, right everybody? Somatic cells are the body cells. It is also called equational division because अगर mother cell के पास मान लीजिए 23 pairs is equal to 46 chromosomes होते हैं, तो daughter cell के पास भी 23 pairs is equal to 46 chromosome होते हैं, क्योंकि meiosis में अगर mother cell के पास 46 है तो बच्चे के पास 23 होंगे, which is referred to as reductional division, but mitosis is equational. It is बराबरी का division. It is called equational. By the way, क्या आप लोग सबने कल ट्रेलर देखा? Pratik Bhaiya is going to come very soon. So we are starting Med Talks. Med Talks episode number 1 is going to be there for each one of you in on Saturday. So Saturday I'm going to get Med Talks for you because BioTonic के इस साल कम से कम 150-200 बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं. तो अगर वो आकर आप लोगों को गाइड ना कर सके तो फिर सीनियर बायोटोनियंस होने का फायदा ही नहीं है. Yes, so it's going to be the Med Talk series. Mitosis is generally seen in diploid cells जो 2n होते हैं. Haploid cells में होता है n से n बनेगा, 2n से 2n बनेगा. That is mitosis. समझ में आया? आया समझ में? n होगा तो n बनेगा, 2n होगा तो 2n बनेगा. That is mitosis. और अगर 2n से n बन गया, 2n से n, this is meiosis, right? So lower plants के haploid cells में, कई बार social insects में mitosis होता है. n से n बनना भी mitosis है, 2n से 2n बनना भी mitosis है. Okay, तो मैं थोड़ा सा brightness को और कम करती हूँ so that you are able to see the photograph. अब दिख रही है आपको photograph? देखो कितना clearly दिखने लग गई. Done everybody? Can you all appreciate the photograph please? Done? Is it perfectly fine? Wow, many शक्ल गायब हो गई, but never mind. So the first phase of mitosis, G1, S, G2.
G1S G2 समझा दिया मैंने, राइट? G1S G2 समझा दिया सारे बच्चों को। तो G1S G2 के बाद M आएगा और माइटोसिस का पहला फेज है प्रोफेज। मैंने क्या लिखवाया प्रोफेज में? PM एट तेलंगाना, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना। तो पहले वाला फेज है जी प्रोफेज, ये है आपका फर्स्ट फेज। इसमें पहली चीजें होती है, सबसे पहले ये जो डीएनए है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप लेना शुरू करता है। जो धागे की तरह से खिचपिच पड़ा होता है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप लेना शुरू करता है। कंडेंसेशन, जैसे खिचपिच पड़ा है, वो धागों की शेप लेना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। अलीशा जी, बालस रेड्डी जी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? राइट? मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल दोनों पास में है, एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर रहेगा। सो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स बोथ द पोल्स। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपिथेलियम सब गायब हो जाएगा, बिकॉज द सेल हैज टू डिवाइड। सो लेट मी रिपीट इट, 3 points we have remembered. सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, नंबर 2 the centrioles will move towards the pole, number 3 endoplasmic reticulum, nuclear membrane and Golgi complex is going to disappear. And remember my dear children, 8 February से क्रैश कोर्स का नया बैच लॉन्च हो चुका है। आज उसका फर्स्ट डे है। अगेन मैंने इसको 50% ऑफ पे कर दिया है, सो दैट आप लोग खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई कर सको, राइट? 1200 बच्चे लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, मेट टॉक्स के एपिसोड्स आ रहे हैं, आप उनमें से 200 बच्चों को यहीं पे मिलने वाले हो, वो सारे प्योर ब्लड बायोटोनियंस हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इस साल आपके जाने का टाइम आ गया है। फिर से क्रैश कोर्स को सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली 50% ऑफ पे कर दिया है। उसके अलावा मेरा कोड यूज करके और 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया है। गो गेट इट। कोड आपको पता है, VD नीट। क्या कोड है? VD नीट। ठीक है, आ जाओ। तो प्रोफेज दिख रहा है, क्या गजब स्लाइड बनाई है, दिख रहा है आपको? कंडेंसेशन होकर प्रोफेज में क्या बन गया? क्रोमोसोम्स दिख गए। क्रोमैटिन फाइबर ने कंडेंस किया, कंडेंस करके क्या बन गया? क्रोमोसोम्स। एंड ये सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं? सेंट्रियोल आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। दोनों कहा, और पोल्स के ऊपर द क्रोमोसोम्स, जो फाइबर्स निकलेंगे, द स्पिंडल फाइबर्स लगेंगे, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होना स्टार्ट कर देंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी कंडेंसेशन। आई विल टॉक अबाउट बोर्ड एंड नीट, नॉट नाउ, रेडी, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। अब मेटाफेज, मेटा वर्ड से मिडल याद रखो, बीच में एक लाइन बन जाएगी जिसका नाम होगा इक्वेटर। और देखो कैसे बीच में सारे क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो गए और एक लाइन बन रही है इक्वेटर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पर होगी? सारे के सारे आकर बीच में अरेंज हो गए। जब सारे लोग, एक बार देखो, जब पुलिस आती है और पुलिस अटैक करती है और उनको सब लोगों को देखना होता है, क्या वो सबसे हैंड रेज करवाती है और बोलती खड़े हो जाओ चलो, सो दैट दे कैन ऑब्जर्व कि किसी के पास कोई वेपन तो नहीं है, किसी के पास कोई गन पिस्टल कुछ तो नहीं है। सो सिमिलरली सबको ऑब्जर्व करने के लिए सब लाइन से इक्वेटर पे खड़े हुए हैं। अगर मुझे कोई एबनॉर्मैलिटी ऑब्जर्व करनी है, मुझे देखना है कि कोई मिसिंग तो नहीं है, मुझे देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, व्हाट इज द बेस्ट फेज to study the chromosomes? The best phase to study the chromosomes is to study them on the metaphase plate. The metaphase plate is referred to as equator. So I started from here. Can you see the nuclear membrane here still? It is trying to disappear. See the nucleus in the nuclear membrane, but here you have no nuclear membrane. So it starts with complete disappearance of the nuclear membrane. It is the most suitable stage for studying the morphology. What is morphology? External appearance. So if I want to see the external appearance of the chromosomes, वो कैसे दिखते हैं, I will observe them in the metaphase plate. और जो ये धागा है, आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर एक लूप होता है, एक लटकाने के लिए, क्रोमोसोम को हैंग करने के लिए एक छोटा सा लूप, जैसे आपकी बेल्ट पे आपने देखा है, बेल्ट डालने वाली जगह पे लूप्स होते हैं, where you can put your belts, you've seen that, right? कोट्स के, शर्ट्स के पीछे होता है, where you can hang them sometimes. तो सिमिलरली आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर भी एक ऐसा लूप होता है. दिस इज रेफर्ड टू एज द काइनेटोकोर. और इसी लूप के ऊपर अटैच हो जाता है आकर आपका स्पिंडल फाइबर.
So metaphase starts with complete disappearance of nuclear membrane. To study, it is the best stage to study. All of them attached in the equator, right? Compact distinct chromosomes. सारे क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गए, छोटे हो गए. और क्या आपको सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? थैंक यू सो मच हर्षी. कैन यू सी ईच वन ऑफ देम सेपरेट 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 आपको दिखाई दे रहे हैं? कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम. और हर एक क्रोमोसोम को अगर आप ध्यान से देखोगे, दो आर्म्स का बना हुआ है. दीज टू आर्म्स आर रेफर्ड टू एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स. दे आर रेफर्ड टू एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स. और इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास है काइनेटोकोर, जिस पर जाकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे. So in metaphase plate, the nuclear membrane disappears, the chromosome shrinks in size, condenses, becomes two sister chromatids which are attached to each other. Yes, everybody. And disc shaped structure बन गए साइड में, जिनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे. These spindle fibers are attached to the kinetochore, and these two are referred to as the sister chromatids. They are absolutely same. Hajira, are you understanding? So this is about metaphase. Chromosomes arrange on the center. The center is called the metaphase plate, or the center is called the equator. And guys, have you liked, have you shared, have you subscribed? Now can you see कि ये सेपरेट हो रहे हैं? देखो, सच अ ब्यूटिफुल जिप. क्या आपको दिख रहा है? ये दो दो आर्म्स लगी हुई है सिस्टर क्रोमैटिड्स. इस पे देखो, दोनों आर्म्स सेपरेट होने लग गई हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस इन एनाफेज. Splitting of each chromosome at centromere in two sister chromatids. सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर वो है जहां पे ये दोनों PQ आर्म्स, ये सेंट्रोमेयर है. ऊपर की आर्म शॉर्ट होती है, नीचे की छोटी. और इसके बाहर का पार्ट है काइनेटोकोर, जिसपे लगा हुआ है स्पिंडल फाइबर. इज दैट क्लियर? और वो पुल अपार्ट हो रहा है. Two chromatids start moving towards the opposite poles. Am I right, everybody? Thanks. Done. Chromatin is the fiber. Chromatin ये है, ये फाइबर क्रोमैटिन है. फाइबर जिसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स भी लगेंगे, फिर वो न्यूक्लियोसोम कहलाएगा. और ये क्रोमोसोम को जो शेप है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. Arms कहलाएंगी chromatids. The fiber is chromatid. So this is anaphase when they tend to separate. Can you also see a furrow getting made? Can you also see a furrow getting made? Can you all appreciate the furrow which is getting made? और लास्ट में जब वो सेपरेट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बन जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाएगा. जो सब कुछ लॉस्ट हुआ था फर्स्ट वाले में, जब वो दोबारा बन जाएगा, दोनों सेपरेट हो गए. द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, chromosomes reach the opposite pole, lose identity, they are no more discrete units. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गई, क्रोमोसोम्स नहीं रहे, क्रोमैटिन फाइबर बन गया दोबारा, न्यूक्लियोलस दोबारा आ गया, न्यूक्लियस का सेंटर इज न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा आ गया. दैट इज टेलोफेज. यहां तक बात होती है कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन की. अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की. सेल डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. अगर एनिमल सेल डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चों, बिकॉज एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मूव टू द साइड, तो अगर एनिमल सेल डिवाइड कर रहा है तो वो ऐसे बाहर से अंदर, ये एनिमल सेल है. एनिमल सेल देखो, जिसको मैंने फरो बोला था, ये ऐसे क्यों डिवाइड कर पा रहा है? क्योंकि एनिमल सेल को ऐसे पुल करने के लिए सेंट्रियोल है. एनिमल सेल्स ये बाहर से अंदर, क्लीवेज फरो देखो, बाहर से अंदर. अंडरस्टैंडिंग लावण्या, लक्ष्मी, it is coming, this is that. But in a plant cell does not have centrioles. Animal cell के पास contractile protein actin है, constrict होगा, see it has actin. Animal cell will divide like this from furrow, but plant cell के बीच में there will be formation of cell plate from inside, which is also referred to as phragmoplast. Yes? Is that clear? Which is also referred to as phragmoplast.
cell plate. Cell plate always forms from inside to outside. Cell forms from outside to inside. Is that clear? Cell plate always is going to form on the inside. See, it is forming on the inside and going outside. But the furrow in animal cells comes from outside to inside. Why do we need to do mitosis? We need to produce daughter cells with identical genome. Cell has to divide, cheek cells have to divide, eye cell have to divide, nose cell has to divide, gut cell have to divide. We have to produce simple cells. Same chromosome number को मुझे retain करना है. Right? I need the same chromosome number. Restores the nuclear cytoplasmic ratio. ऐसा नहीं कि nucleus बहुत बढ़ गया. Nuclear cytoplasmic ratio is the same. Right? And most important, अगर चोट लग गई, इंजरी हो गई, सेल को रिप्लेस करना है, it also is happening because of mitosis. Correct? एक छोटा सा वीडियो है, वो cannot be loaded क्यों कह रहा है? I've got a beautiful video for you, and then tomorrow I will continue with meiosis. Okay, 1 second, guys. 1 second. गड़बड़ हो गई है. Okay, let's leave it. Okay. Anyways, छोड़ देते हैं. We might continue with this tomorrow. Understandable. And guys, देखो ये मैंने इसकी long term class भी दी है. ये दिखा देती हूँ आपको. So all these recordings are anyways made available to you guys. Every recording is made available to you. अगर आप long term classes भी join करते हैं, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको. देखिए. See. Homologous chromosome separate. यहाँ meiosis करा रही हूँ. Clear your doubt? 24 hours. Cell cycle करा रही हूँ. कोई डाउट of the DNA side so important ये देखो अंदर को आने लगा सेल प्लेट वहां भी कराए तो क्या उसको फेस प्लेट क्लियर योर डाउट ग्लाइकोलिपिड स्टॉलिंग का मतलब होता है स्टॉप करना क्या मतलब होता है स्टॉप करना तो ठीक है तो प्लीज आ जाइएगा पूछ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम है बता दीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट गो बिलो हियर गाइस और यहाँ जाकर you have an additional discount also. Use the code VDNEET and come to our long-term classes. Tomorrow I will start the session from a Menti quiz, do meiosis and then continue. मिलते हैं 9 o'clock because 9 o'clock when we meet we will do microbes and human welfare. Take care. God bless you. Bye. Bye guys. God bless you everyone. Take care and see you sharp at 9 o'clock. Right? Alicia. 12th ka batch. Alicia, just put it down in the comment section now. Alicia, in the next 10-12 days. Yes? Take care. Bye guys. Bye.